आजा बस, बराबर है। साइड में आ जाओ, साइड में आ जाओ, थोड़ा शॉट ले दो। अरे साइड 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 आ जाओ। अरे साइड हटो। धक्का मत दे। अरे ढोल बंद कर। ओनली कास्ट, ओनली कास्ट। एक सेकंड आराम से आराम साइड पे आराम से आराम से सारे आपके जो एक्टर्स हैं, इनफैक्ट मैं जावेद जी ने आई जस्ट मेट हिम अ वीक बैक
he said कि comedy is the toughest thing, no matter what you do, लोगों को लगता है बड़ा easy रहता है. And this is what you sort of specialize in. So, you know, you look like a very serious person all the time. Every time I meet you, मुझे लगता है कि पता नहीं कैसे बनाते हैं ये. So, what is this, that funny bone inside you? क्या है जिसकी वजह से you get the perfect timing every time? Ask my wife. Very rarely will people say, ask my wife for the opinion. Huh? They'll like to keep it to themselves mostly. अगर आप मुंह मियां मिट्टू नहीं बन सकते, what do you think that is so special about Indrajit that he gets it perfect every time? You know, as far as these kind of films are concerned. Been a funny guy. I think it's working. I think wait for it, sir. Please do have a seat. I'm going to show the trailer to you guys right now. Anand Pandit ji and Markan Adhikari ji. Yes, we're going to. Yeah. With us. Markan ji, Anand ji, please come on. Big round of applause, ladies and gentlemen. Yes. We'll do collective Kumar photo ji. ops in the night after this Please anyway. आइए. And Sangeeta ji कहाँ है? Sangeeta ji. Actually, yeah. We're going to do this photo op a little later, so just do a quick one shot. मैं बाद में तो वैसे ही करवा ही रहा हूँ. ठीक है? Thank you guys. Thank you guys. Please Thank have a you. seat, gentlemen. Ah, Sangeeta, there you are. Okay, light again, please, gentlemen. उसके बाद I'm going to play the trailer for you guys. Okay. Let's have a seat, gentlemen. And Sangeeta ji will just play. Ajay sir, big round of applause. Anil ji? Yeah, there you are, sir. He's getting a perspective from the back. Ma'am. Yeah, okay. Arshad sir, आइए on stage. Javed ji sir, where are you? There you are. Big round of applause, ladies and gentlemen. We keep it going. Baman sir, Johnny Lever sir, Pito Bash, where are you, gentlemen? कैसे हो sir? What a pleasure. बढ़िया sir. Okay, I'm now going to stand and give. Can I have the mics for everyone, please? Ah, yes. Okay, one by one, let me just give all the mics across, please. We'll play Pass in the Puzzle, sir. One. We go a little ahead. आप उधर चले जाओ, no problem. There you go, sir. I think we've covered everyone. But I got a little surprise for you. 50 crore का जो game है. First of all, I'm going to ask a little question to the crew also and the cast. How many zeros there are in 50 crores? But उससे पहले, because it's all about 50 crore and money and how it excites everyone, I thought it थोड़ा सा खाली लग जाएगा if we don't have money on the stage also. So ladies and gentlemen, let's have a little shower of money right here, right now in this big theater. Where's the shower? Where's the shower? We're going to look up somewhere. There we go. Yes, you can check if and see if it's real. उसके बाद you can decide to take it forward or not. ऊपर से हाँ कहाँ से आ रहे हैं? साइड से आ रहे हैं सर, साइड से. और पहुंचते पहुंचते जो जरूरी लोग हैं उनके पास ही रुक रहे हैं. हमारे पास नहीं आ रहा है. Okay, all as souvenirs you can keep it. यही वाले same जो notes है ये बाहर भी हैं in case you go outside. There's lovely little crystal maze there. All right, thank you very much, gentlemen. That was a fantastic promo, sir. और 50 करोड़ का जो क्वेश्चन है सर, पहले मैं अजय सर आपसे पूछूंगा कितने जीरो है 50 करोड़ में सर? हाँ? 8 है. अजय साहब मुझसे पूछ रहे थे, मेरे वाला मुझे भी नहीं मालूम. 50 करोड़. जावेद सर कितने हैं? आई थिंक अजय को ज्यादा मालूम होगा क्योंकि 50 करोड़ ले रहा है आजकल. नहीं, मैं कभी जीरो नहीं गिनता. जीरो गिनने की आदत नहीं है. But it's right. This is fantastic. Since the mic is with you, Ajay sir. 8, I think. 880. 8 zeros is the right answer. You'll want one before that. Actually, you'll want a 10 before that, Inderji. And that's the beauty of it. Ajay sir, are you happy with the promo? You know, a lot of the times when the trailer comes out, one gets a little nervous just to figure out if everything has gone as it is. Oh, yeah. You've seen it. I know you had an immediate reaction. What do you think about it? Of course, Perfect. I'm very happy with the promo. I mean,
I'll be happy if everybody else is happy. If they are happy. So let's ask them what the reaction is. Yeah, yeah. You better. आप लोगों को पसंद आया तो हमें पसंद आया. हमें सर आपकी एंट्री अभी 1 महीने पहले ही बहुत पसंद आई थी सर. आपने जो कौन सी entry? सिंगम में जो धमाकेदार एंट्री दी थी, आई थिंक एवरीवन बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. इट वाज फैंटास्टिक. सिंघम नहीं थी. सिंघम नहीं थी. सिम्बा Ah, थी. Simba, same thing. For us, it's Singham only. But you know, the thing is, you have this grand entry with all these big vehicles always. This is always there in your life. यहाँ पे भी बड़ी गाड़ी, बड़ा plane. वहाँ पे भी बड़ी गाड़ी, बड़ा plane. All these things keep happening. पहली फिल्म में फर्स्ट फिल्म में मैं बाइक पे आया था. जी. उसके बाद गाड़ियाँ बढ़ती गई. यहाँ पे तो plane भी आ गए पीछे. I don't know if you're in the plane or not. सन ऑफ सरदार में मैं घोड़ों पे आया था. अच्छा घोड़े वाह. We go back and forth. We cover it. The lady is standing right next to you, ma'am. Such a pleasure. You're looking so fantastic once again. Thank you. And the gentleman standing over here, sir. We did a 10-year challenge of it, but trend हो रहा था Instagram पे. You were trending above the 10-year challenge. Anil ji with a 40-year challenge doesn't matter. It doesn't change at all, sir. First time an actor was trending above a hashtag. So, अभी once and for all बता ही दीजिए, sir. What is the राज? गाना चेंज हो गया है. 1 2 का 4 नहीं है. 10 का 20, 20 का 40. But you're coming back with Madhuri ji after many years. You know, it looks like, you know, you're obviously you can pick up where you left off. Just the memories are coming back on set with her, you know, in a film. Well, I think more than anything else, I think it's been a wonderful working on this film, and with Induji, Ashok ji, the entire team, and you know Ajay also, you know, has been wonderful. Absolutely, they all have been fantastic producers, and we have a great team. Fox, you know, I have a long association with Fox. It's on 23rd of Jan. It'll be 10 years, you know, and of course, so you know what happens is, the director and the producer are so good, everything just goes. So there was not a moment where there was any hitch in this film. There was no hiccups. Everybody was very happy. And we, you know, it was, the whole film has been made with joy, happiness, and what do you call, complete teamwork. Coming back to Madhuri, the question you asked me. Good afternoon, good evening, ladies and gentlemen. It's wonderful to see all of you all over here. And well, it is not only me and Madhuri, Madhuri and me coming together. It's Ashok, Indu, Madhuri, myself coming together. So that's, we've had absolutely a phenomenal association. And so to be back, all 4 of us together, is not only, you know, professionally great, which has always been professionally fantastic, but even emotionally. And hopefully, we again live up to the expectations. I think it's already working. Madhuri ma'am, what would you like to say? Has he changed at all as a person, as an actor? Though he only seems to be expanding his repertoire all the time. I don't think he'll ever change. Good evening, everyone. I don't think Anil can ever change. He'll always be the same. He was the same in 98. से आपने वो डाला था challenge का, तब से लेके आज तक. I think he's 58 maybe. So I don't think he'll change. He's one of a kind, and it's always a pleasure working with him. This film saw me teaming up with my Dil Beta Raja Jodi, Indu ji and Ashok ji. And I'm working with Ajay also after a long time. We're in one frame together after Ye Raaste Hai Pyar Ke with Anil ji after Pukar. So it was wonderful teaming up with everyone. Even Javed Jaffrey I worked with after 100 days, I think, Javed. And so I think if the amount I have laughed in between shots with all these people around me, I think the audience, even if they laugh half the amount, I think this film is a success then. Because it's been a mad journey for me, and it was wonderful. I thoroughly enjoyed it. It looks like it's been real fun. She mentioned, Javed sir, you're meeting Anil ji after 30 years on the screen. More than 30 plus years. Yeah, about 33 years approximately. That's incredible. मुझे तो A reunion हो रहा है of sorts. I look better. But you know, I met you recently and you said that this is one of the tougher roles that you've done, that people don't understand how tough it is to do this kind of a role. You know, and they think that ये तो बड़ा easy आ रहा है. So, you know, reprising that role must have been good fun. No, see, I give all the credit to Induji, honestly, because this man has kept everybody in control. We go wild. And he has to keep going, why, come down. He's out of control.
So I would give a lot of credit to him because he's put it together the way this character was structured. And it seems simple, but it's not as simple as it looks on screen. So because there's lots going in there. I'm sure there's a lot going in there. तुम इतने serious लगते हो पीतो बाश, but you are such a powerhouse of talent, and I'm so happy to see you on such a large scale. Thank you. और please आप वापस आते रहना. कई बार मुझे लगता है आप गायब हो जाते हो 6-8 महीने के लिए. आप अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहे होते, but just the experience of working with so many people. इनका तो reunion चल रहा था, आपका तो reunion नहीं हुआ किसी के साथ में. Reunion में अकेला हूँ जो कि मतलब Union हो गया. और this, if you ask me, generally this is my first multi-starrer mainstream commercial film. So generally people say like, oh, masala banate hai, but it's so difficult to actually cope up with work this kind of cinema. I actually learned a lot, and thank you so much to Indu ji that इतने senior actors के साथ मैं काम किया और mainstream में मेरी पहली वैसे film है और मुझे सीखने को बहुत मिला. I hope to see so much more of you there. आपके साथ में जो gentleman है Arshad, how are you doing, sir? I'm doing fine, brother. Yeah. I'm doing fine. It really looks like it's a party every time I see you. I know. Off screen and on screen also. So was this another setup very easy for you to jump into? Absolutely, always. I mean, I think absolutely fine. All these guys have got great sense of humor. All of them. So who's the actual funniest of the lot? No, I'll tell you who's the quiet funny is Ajay. You never know when it's coming. He's like that. So I think all these guys, Ritesh got a terrific sense of Javed, I'm saying all of us are quite nuts. And Mr. Kapoor is outstanding. I just love him. See, I want to know something. Is that Mr. Kapoor, does it happen on set? Respect. There's a lot of respect. Yeah. Can't stand him, but a lot of respect. The gentleman over here, you're talking about so many funny men. You got two of the funniest and most talented actors in Bollywood, Johnny Ji and Vijay Ji. Big round of applause for them. Sir, we're all fans of you. I'm a super fan of your daughter also. वो आपके footsteps पर चल रही है सर. आपके लिए तो बहुत easy होता है ना ये. आपके तो ऐसे literally like good night switch होता है ना. बस on कर दिया और बोलना शुरू कर दिया. हेलो चलो. वापस आके ये पूरे सेटअप में कैसा लगा सर? बहुत बढ़िया सर. आप सोच सकते हैं 86, 87 से साथ में हम लोग इंदु भाई के साथ कसम पिक्चर की थी हमने. उसके पहले तेजाब. फिर आप सोच सकते हैं माधुरी जी के साथ मैंने बहुत समय बाद काम किया है. और अजय भाई, अरशद भाई, जावेद भाई तो करते रहते हैं हम लोग साथ में. और इंदु भाई देखते रहते हैं कि मेरे लायक कोई हो तो मुझे स्पेशली बुलाते हैं. तो उनको लगा इसमें कुछ मेरा मामला हो सकता है, मेरे लायक कुछ है. तो आपने देखा होगा रिक्शा, हेलीकॉप्टर. अब अंदर देखिए और क्या क्या हुआ है. तो बड़ा अच्छा लगा. विजय पाटकर. मुझे तो सिर्फ 200 करोड़ होते उसी फिल्म में काम करता हूँ. जैसे कि धमाल हमारी पहली, सिम्बा, सिंघम. इंदु जी को मैंने पूछा कितना बिजनेस करेगी. इंदु जी बोले कम से कम 350 करोड़. तो मैं आई विल साइन. तो मैं साइन करता हूँ. इंदु जी थैंक यू. Thank you. Indu ji, thank you very much. Ashok ji, thank you very much. Indu ji, just before I open out to the media, I think everyone will ask you this question. How do you keep it all going together? Like they say, what a respect that you've managed to get this reunion, college, school, सारे reunions यहाँ पे हो गए. But once you are on the set, this kind of a chaotic film is tough to manage, I think. मतलब इतनी सारी चीजें हो रही होती है. No, it was not a tough thing. They are all very good. They all cooperated very well. And behaved very well. I have to say that. And I think Indu ji is, I swear, I think we all can say that he's the sweetest director we have ever worked with. गाली नहीं निकलती मुंह से. Yeah. And हमने इतने फट्टे मारे इनके ऊपर. He takes it like a man. Just before I ask them, sir, आपको किससे सबसे ज़्यादा surprise किया? पूरी cast में who surprised you the most? Surprise? Yeah, like pleasantly surprised. बहुत wow, ये बहुत amazing performance होगा. I didn't expect so much. नहीं ऐसा नहीं होता इस पिक्चर में. ऐसा नहीं होता है. इस पिक्चर में शॉक होता है, शॉक. सरप्राइज नहीं होता. सरप्राइज नहीं होता है. एक चीज मैं कहना चाहूँगा. This is like a dream project for me and Ashok ji and everybody of us. And ये एक dream पूरा होने जैसा है. It's like a dream coming true. Getting all these guys together is not easy, but we got them together, and I thank them being together. But I would like to thank Ajay because he got this project together, and
It's because of him we are all here. So big round of applause for Ajay, please. Wonderful. All right, I think I've hogged the mic enough with all the questions. I'm going to open it out to the audience. Yeah. अर्षद जी, आपके राइट में यहाँ शुरुआत वहां से ऑलवेज होगी. हाँ जी, क्योंकि आप तुम फिर शुरू हो गए यार. तू घर चल मेरे साथ, रोज पूछा कर मेरे को सवाल. तो मतलब प्रॉब्लम क्या है? 500 करोड़ की बात हो रही है ना, तो इसलिए सवाल पैसों से स्टार्ट. हाँ, इसलिए सवाल पैसों से स्टार्ट करेंगे. एक्चुअली आप सभी से जानना चाहते हैं, हॉल में यहाँ जितनी भी 2000 और 500 की नोट है, उसमें आप सभी की तस्वीरें हैं. रियल में जो 500 और 2000 की नोटें हैं, उनमें से कभी आप लोगों ने चाहा कि आप लोग की अर्षद जी, अजय जी, माधुरी जी, अनिल जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, ऐसा कभी सोचा आप लोगों ने या चाहते हैं कि सिक्योरिटी बुलाओ जरा. सिक्योरिटी बुलाओ. But you have to applaud him for the creativity in the question each time. I love him. Yeah. कल रात He भर really सोच के आया होगा. works hard to come out with the worst questions. I love him. अजय जी आप चाहते हैं कुछ ऐसा कि ऐसा हो? ये एक्शन फिल्में करता है, क्यों से सवाल पूछ रहा है ऐसा? I think that's the answer. Nobody wants that. बैठ जाना, बैठ जा. अच्छा इंदर जी एक सवाल आपसे ये कि ढेरों सारी पर्सनालिटी हमें स्टेज पे दिख रही है. इसके अलावा भी हमें ट्रेलर में हमने देखा कि सोनाक्षी सिन्हा, ईशा गुप्ता और कौन है, लाइक कुछ एक नाम खुलासा करना चाहेंगे आप? कोई और? बमन जी भी आपने देखा होगा. हाँ, वो भी बमन जी आ नहीं पाया आज. आप खाली हीरोइनों की बात कर रहे हैं. आधे लोगों को हमने जानबूझ के नहीं बुलाया क्योंकि स्टेज का साइज हमें बता दिया गया था. रितेश नहीं है. हाँ, रितेश जी नहीं. हाँ, we are missing रितेश definitely. हाँ, संजय मिश्रा जी भी नहीं है. तो ये 3 जने अभी इस वक्त नहीं है. और अनिल जी एक मेरी तरफ से दूसरों को भी पूछने देना बेटा. जी ये एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, ये जो स्टेज पे जो आपने एनर्जेटिक डायलॉग दिखाया, मर्द का बच्चा है, तो कुछ एक लाइव दिखाना चाहेंगे हमारे सामने कुछ? ओ जमूर है, गुलाटी मारेगा. एक लाइन वो हमें वीडियो अच्छा मिलेगा. नहीं, आजकल मैं कोई भी चीज फ्री नहीं करता. इस 35 साल काफी लोगों के लिए फ्री किया. अब थोड़ा बच्चों को पालना है, बड़े हो गए सब. पत्नी जो है वो डांटती रहती है. बैंक बैलेंस अभी भी उतना ही है जब करियर शुरू किया था, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता. Chalo, we'll take one on somebody. Yeah. Hello. Go ahead. The gentleman in the turban over there. One sec. अरे माइक किधर है? Oh. This is for whom? Madhuri ma'am. First of all, this film was being directed by Induji, and I had not worked with him for a very long time. Then I'm paired with Anil ji in the movie. Ashok ji is one of the producers. And of course, the star cast is brilliant. There's Ajay and there's everyone in the movie. I heard the script, and I think everything was based on the script. As soon as I heard it, I couldn't say no, because it is so funny, the movie, and it gave me something different to do after a long time. So, there's your answer. I just loved the script, and I did it. And of course, everything else. And we all needed motivation. Good afternoon to everyone. This is Simran Singh here. मेरा सवाल आपसे इंदर जी. डबल धमाल ended on the note कि जहाँ आदि and gang says कि हम बताएंगे कबीर नायक को कि क्या होने वाला है टोटल धमाल में. So why कबीर नायक is missing? मतलब अगर don't you think अगर संजय दत्त भी होते तो शायद फिल्म में और मजा आ जाता. What do you want to say about it? एक्चुअली बहुत मज़ा आता अगर वो भी हमारे साथ होते, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे उनकी डेटों की प्रॉब्लम थी और इतने सबको साथ में लाना इज़ नॉट ईजी. सो कबीर सिंह को आई हैड टू ओमिट, एंड वी बोथ आर रियली unhappy about it, even Sanjay and me. Okay. So I have another question with you. So Dhamal has earned a cult status and Double Dhamal also received good appreciation, but there are certain section of people who said the Double Dhamal was not at the par of the successor of the predecessor. So don't you think that when you look back, do you think कि Double Dhamal थोड़ी और अच्छी बन सकती थी? What do you want to say about it? मुझे हाँ, yes. देखिए, I agree with you. Double Dhamal was good, but not as good as Dhamal. I agree wholeheartedly. And we have tried very much कि इस बार आपको ये शिकायत का मौका ना मिले. Hi sir. Hello. Hi Ajay. Hello Indu sir. This is Urvi on your
On the left. Yeah, stage left. Sir, since you have got Anil ji and Madhuri ma'am in the film together, will we get to see them dance on the iconic song "Dhak Dhak Karne Laga"? Is there a possibility of it? यहाँ पे धक धक नहीं है, बक है। धक धक का प्रॉब्लम है, इस फिल्म में सब करना चाह रहे हैं माधुरी के साथ। So I think next film में। I say I want to see Anil Kapoor dance. Next year. इसमें ऐसा कुछ नहीं है, but hopefully आगे फिर करेंगे। हाय, मेरा सवाल पूरी टीम से है क्योंकि ये वाइल्डेस्ट एडवेंचर पे मूवी है, तो हाउ वाज एक्सपीरियंस? आई नो वीएफएक्स सब यूज़ किया है, इंडिया में बहुत टाइम बाद एक एडवेंचर वाइल्डेस्ट एडवेंचर पे आ रही है, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? कैसे आप लोगों ने शूट किया? मुझे शूट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट भी था और काफ़ी इजी भी था, एंड बट हम लोगों ने किया। मतलब एडवेंचर फिल्म दिखती बहुत इजी है, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू शूट। बट मैं ख़ास मेंशन करना चाहूँगा, अजय की टीम है एनवाई स्टूडियोज़, जो स्पेशल इफ़ेक्ट का काम करती हैं। उन्होंने ब्रिलियंट स्पेशल इफ़ेक्ट किए हैं, एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक्चुअल क्या है और क्या क्रिएट किया गया है। सो इट वाज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। इंदु जी, ऑन योर लेफ्ट, Stage left, sir. Yeah. On your left. Hi. Udhar. This is Faridun from Bollywood Hungama. Sir, fantastic promo, really funny. And my question to you is, I think the lines are very funny. The writing is very funny. Rope and hope. I think a lot of fun is happening over there. So if you can please explain us about the collaboration with the writers and who are the writers and how the experience. Thank you. Ved Prakash and Bunty and Paritosh Painter. I hope they are here. They are not here. Okay, please give a very big round of applause for them. They have worked for 2.5 years to write this script. And they should have been mentioned. Very nice of you for reminding us. Thank you. इंदु जी, सोहेल ऑन योर लेफ्ट ओनली, यहीं पर। हाँ जी। हाँ, लगता है कि इस टाइम पर ऐसे पॉसिबल होता है कि इतने बहुत स्टार्स को एक साथ फिल्म लेना। सबसे पहले तो वो थॉट कैसे आया कि एक साथ इतने लोगों को जमा करना? जैसे आपने कहा कि अजय जी का कॉपरेशन बहुत था उस चीज़ में जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज के पहले ऐसे बनती थी कि बहुत एक मल्टी स्टारर फिल्म बनती थी, पर आज के टाइम पर इट्स वेरी डिफिकल्ट एज डेट्स पाना, फिर सबको एक साथ लाना, सब कुछ जस्टिफाई करना रोल, तो वो एक प्रोसेस थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे। इसमें मैं कहूँगा कि राइटरों का बहुत बड़ा हाथ है कि जब हम जिसको भी जाके स्क्रिप्ट सुनाते थे वो इंस्टेंटली हाँ बोलता था। जैसे अभी माधुरी जी ने कहा कि मैंने स्क्रिप्ट सुना तो एवरीथिंग वाज बेस्ड ऑन स्क्रिप्ट। सो दे हैव डन अ स्वेल जॉब, सुपर्ब जॉब, एंड यू हैव दिस फिल्म। व्हेन यू सी द फिल्म यू विल सी मोर ऑफ इट। अजय जी, गोलमाल का एक फ्रेंचाइज है, अभी धमाल में आप आ गए हो, कैसे देख रहे हो आगे इसका एसोसिएशन? नहीं, ये जवाब आप दीजिए कि आप कैसे देख रहे हैं। आई एम सीइंग, मैं तो चाह ही रहा हूँ सर आपको देखो एक्चुअली। नहीं, जैसा कि एवरीवन लाइक्स इट। जैसा कि इंदु जी ने कहा कि धमाल तो ठीक है, बट स्क्रिप्ट इतना फनी था, एंड माधुरी आल्सो सेड दैट। एक वो रीज़न था ये फिल्म करने का, और दूसरा ऑनेस्टली जब जो आपने इंदु जी से सवाल पूछा कि इतने सारे स्टार कास्ट आपने कैसे जमा कर ली, सबसे पहला रीज़न तो स्क्रिप्ट होता है, और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि आई थिंक एवरीबडी हियर विल एग्री कि जितनी अच्छी गुडविल इंदु जी की है, आई कांट टेल यू। आई मीन एवरीबडी लव्स हिम बिकॉज ही इज़ अ जेन्युइन पर्सन, एंड ही इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट पर्सन पीपल आई नो इन द इंडस्ट्री। जस्ट वन थिंग, अनिल जी, गुजराती कैरेक्टर प्ले करना कितना मजा आया? एंड लाइक वो जो डायलॉग्स आप पटेल भाई, it was tough to be honest with you, because there are certain dialects which they come very easily, but with Indu ji being a Gujarati, so मैं तो सिर्फ ये बोलता है, मैं डायलॉग बोलने से पहले इंदु जी एक बार बोल दे यार। So in the mic you say, and as the way is to render the lines, so I have a lot of times I have imitated Indu ji, and then of course there is, I don't know if he over here, there is Suraj Vyas. Is he around? Suraj Vyas. So he was very, very helpful. I used to sit with him, and we did a lot of quite a few workshops with him to get the. We tried. I've tried. I hope people feel. And if I was going wrong, Indu ji was always there to correct me. So Suraj Vyas and Indra Kumar ji. Madhuri ma'am, you have. और शुरू में इन्होंने पंजाबी में शुरू कर दिया था।
तो धीरे-धीरे फिल्म खत्म करते गुजराती पे आ गए। नहीं कई को फिल्म अजय जी ने देखी है तो उन्होंने कहा भी यार एक दो जगह जरा के ठीक कर देना। मैंने बोला so always there is a room for improvement, but I'm sure next time करूँगा तो और better करूँगा, but I've given my best in this. Madhuri ma'am, you have recently turned producer with 2 films. Can you give the latest update on 15th August? 15th August will be released on Netflix, or we are looking at April to release the movie. And will you be continuing to produce films in the future? Yes, absolutely. Thank you, ma'am. Hello. Anil sir, hello. Anil sir. Hello. Sir, this is Kishan sir. How was the experience you meet the Prime Minister Narendra Modi? Can you share the details about? Have you talked about the? It was wonderful, absolutely. It was, I've been wanting to meet him since quite a few years, when he was the chief minister in Gujarat, but it never happened. There are certain meetings which are destined. So, I was fortunate. I had the privilege and honor to meet him. I got an appointment and I met him. It was wonderful, absolutely, very inspirational. And, whoever, I don't think so I've seen anyone working so hard. Do you think he should be the next Prime Minister of India? Sorry, no. I think, obviously, that's for all of us. I think we'll see. And, well, this is not a political platform. When we go and vote, we'll all decide. Hello, Johnny Lever. One sec. Johnny Lever, sir. One sec. So we'll wrap up with this last question. Johnny Lever. Yeah. Sir, how are you? Ramesh Rao. आपका दोस्त हमेशा आपको सवाल करता है। रमेश राव। ठीक है। रमेश राव हम सीनियर आजकल। जॉनी ली जी आप तो सीनियर हो, सबके साथ आप काम किए, कोई बोलने की जरूरत नहीं है। अनिल जी, अजय जी, माधुरी जी और हमारे नए जो और मतलब अरशद वारसी एंड जावेद जी, ये भी सब कॉमेडी करते हैं। नए नहीं है सर वो। नहीं मतलब वेटरन न्यूकमर ना दो के साफ लगता हूँ बस। So they are all doing comedy. तो सर how you like again इनके साथ वापस करना कैसा लगा आपको सर? बहुत अच्छा लगा, बहुत इसीलिए आपने देखा ना मुझे। हाँ, हेलीकॉप्टर एंड और गाड़ी और हेलीकॉप्टर आप चेंज हो रहे हैं। जी जी बहुत अच्छा लगा और कमाल के आर्टिस्ट लोग हैं, इनके साथ काम करके मजा ही आएगा भाई। Yes. Wonderful guys. Okay. We'll have one, and I'll just wrap up because I'm going to have a few more photo ops. Arey. Ma'am, this traveling mic is always a stress. Ma'am, हमारे sources बता रहे हैं कि you are going to fight the election 2019 from. That is the reason you have decided पक्का to stop it from here. एक सवाल हो गया। That's it done. All right. I'd like to invite on stage Kumar Mangat ji. You're in the wrong place. Yeah, Anand Pandit ji, Sangeeta ji, and Makaran ji on stage as well, please. Big round of applause, ladies and gentlemen, and we'll now have a nice photo op. Thank you so much, gentlemen, for such a entertaining press conference. And Arshad Varsi, you were on fire today. Really on fire.